Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about reproduction. As you know, reproduction is the process of formation of young ones of the new generation. Male reproductive system consists of testes which are present in a sac called scrotum. From testes, epididymis is a bulging portion outside of it, and a duct called vas deferens takes the products of testes towards the body, and first of all it gets the secretions of the seminal vesicles. When it joins with the seminal vesicle secretions, then it is called ejaculatory duct, this vas deferens then passes through prostate, and after passing through prostate it becomes the urethra or urinogenital duct, and it provides the passage outside the body through the penis. This is another view of the same diagram. Testes are the structures responsible for the process of spermatogenesis and the production of sperms. They are first taken to the epididymis. From the epididymis by ductus deferens or vas deferens or sperm duct, they are taken back towards the main body. They loop over the ureter, and from seminal vesicle they get the secretions. Then this duct is called ejaculatory duct, and it receives the secretions from the prostate gland. Afterwards, it receives the secretions from the bulbourethral glands. These different glands are responsible for providing the medium or nourishing material required for the survival of the cells. Then it passes through the urethra and outside the body. This is the internal structure of this testes. Testes contains many lobules which are filled with seminiferous tubules. Seminiferous tubules then undergo the process of spermatogenesis, and they provide spermatozoa to the rete testis. Rete testis is a network of tubules which takes the spermatozoa to the epididymis by efferent ductules, and epididymis carries it to the next part, which is vas deferens. If we look at the sections of seminiferous tubules, then you can see that mainly there are cells, large cells called Sertoli cells. Sertoli cells provide nourishment and all the requirements for the process of spermatogenesis. There is a basement membrane, and inside these seminiferous tubules there is a lumen or cavity. These different shaped and colored cells, green colored cells, these are actually different steps of spermatogenesis. Between the seminiferous tubules, there are interstitial cells or Leydig cells. Leydig cells or interstitial cells are hormone producing cells. They produce the hormone testosterone. This is an enlarged section of the seminiferous tubule which is showing different steps of spermatogenesis. First of all, there is spermatogonium. Then after first meiotic division, primary spermatocyte. After second meiotic division, spermatids. Spermatids are initially round, but later they change their shape. They become elongated, and now they are ready with their flagellated and elongated structure to swim through the different fluids and reach the female reproductive system. The hormonal control of male reproductive system is such that hypothalamus is responsible for releasing the hormones that stimulate the anterior pituitary. GnRH हार्मोन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. सो एंडोक्राइन सिस्टम में कि GnRH gonadotropin releasing hormone from hypothalamus comes and acts on anterior pituitary. Anterior pituitary में इसके दो तरह के एक्शंस हैं. ये जो एक्शन है ये क्या है? LH releases from the anterior pituitary, और LH जो है वो जाके किसके ऊपर एक्ट करेगा? interstitial cells के ऊपर. Interstitial cells, as a result, they will produce the hormone testosterone. This testosterone has got a negative feedback mechanism on the anterior pituitary, and it suppresses the production of LH from the anterior pituitary. ठीक है जी. While 2B is showing FSH, follicle stimulating hormone, which is released from the anterior pituitary. FSH is responsible for the stimulation of the seminiferous tubules, and it is responsible for activating the production of sperms. So spermatogenesis के ऊपर इफेक्ट किसका है? FSH का. टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इफेक्ट किसका है? LH का. अच्छा, यहाँ पे जो सर्टुली सेल्स हैं वो भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इनहिबिन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी.
to inhibit the production of these hormones. Testosterone भी LH और FSH की production को inhibit करता है जब इसका level high हो जाए, और Sertoli cell से जब inhibin produce होता है तो वो भी इन hormones को negative feedback के जरिए inhibit करता है. Now we come to words female reproductive system. Female reproductive system mainly consists of ovary. Ovary are the gonads which are responsible for the production of ova or egg. The ovaries release the ova and it is captured by the fallopian tube with these finger-like projections called fimbriae. Funnel-shaped structure is present here. Fallopian tube, the eggs move through the fallopian tube by the ciliated structures on the wall of the fallopian tube, and it reaches the uterus. Uterus is a large structure and it is the body of the uterus which contains three layers: perimetrium, endometrium and myometrium. Perimetrium is responsible for attaching the uterus with the body wall, and myometrium is a thick layer responsible for providing contractions during the process of labor, while endometrium is a layer which changes its thickness according to the different stages of the menstrual cycle. The opening of the uterus is called the cervix, which opens to the outside through vagina. Vagina is also called birth canal because it acts as a passage for the baby to come out of the uterus. Uterus is the place where the embryo is implanted and it undergoes the production of the process of development, and after complete development it comes out through the vagina. Now the female reproductive system is very complex as compared to the male reproductive system, and there are many changes associated with it, so we are going to discuss it in detail. Ovarian changes are these: that initially there are primary follicles. These are like spermatogonia. These are the cells which are in storage form, and at a time only one of them starts undergoes the process of development. FSH from the anterior pituitary acts on primary follicles, and one of the primary follicles becomes enlarged and it starts development, and the cells which are present in the surrounding of the primary follicle, they become primordial follicle, and after some time this primordial follicle becomes very much thickened, and at this step it is called the secondary follicle. Afterwards there is the accumulation of fluid in the surrounding cells. This stage is called mature follicle or Graafian follicle. Graafian follicle ruptures to release the ova, and this process is called ovulation. These cells which are surrounding the developing egg or ova, they initially produce estrogen as a result of FSH stimulation. FSH is responsible for stimulating the follicles. The ova undergo the process of meiosis, and the surrounding cells, they divide and redivide, and they start producing estrogen. At this step, the follicle ruptures and the ova is released. Now estrogen producing cells become corpus luteum. The follicle cells, the remaining follicle cells, they become corpus luteum. Corpus luteum, under the action of LH, luteinizing hormone, is responsible for the production of progesterone. The mature corpus luteum, initially they are ruptured due to the process of ovulation. Then they become dividing. Then they start dividing and redividing under the action of LH, and they form a structure called corpus luteum. This is the mature corpus luteum, which is responsible for the production of progesterone. Later, the production of LH decreases and the corpus luteum becomes a scar called corpus albicans. This diagram is showing the relationship of menstrual cycle and hormonal regulation. There are various steps of this diagram. देखिए सबसे ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी के ऊपर भी हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा LH-FSH की प्रोडक्शन को. LH-FSH प्रोडक्शन जब होगी, ये LH को रेड कलर के ग्राफ से शो किया गया, FSH को ब्लू कलर से शो किया गया. FSH आके और LH दोनों आके ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे. ओवरी से फिर हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. ये पर्पल कलर से, लाइट पर्पल से एस्ट्रोजन को शो किया गया है और येलो कलर से प्रोजेस्टेरोन को शो किया गया. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का टारगेट ऑर्गन है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. ठीक है जी.
अब हम फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सब कुछ जो चेंजेस आ रही हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ये ओवर द पीरियड ऑफ राउंड अबाउट 28 डेज हो रही हैं और एक साइकिल की फॉर्म में रिपीट हो रही है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट जब इसका स्टार्ट लिया जाता है, फर्स्ट फेज, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस: menstruation, proliferative phase, ovulation and secretory phase. Menstruation जो है the day when the menstrual bleeding starts, that is called the first day of menstruation. It is from day 1 to day 5. अच्छा, अब ये नॉर्मल जो है ये एक एक्चुअली एवरेज है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन्स. So at the start of the menstrual cycle, the endometrium wall is getting sloughed off or removed because the hormones which are responsible for the over thickening of this layer endometrium, they are very low at this phase. जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो होंगे तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि thickening of endometrium wall of uterus depends on the presence of estrogen and progesterone. और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन डिपेंड करती है एलएच और एफएसएच पे. इस स्टेज पे एलएच और एफएसएच लो है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई. अब इसके साथ ही क्या चेंज आना शुरू आता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म होती है, नेक्स्ट फेज कहलाती है प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में एफएसएच का लेवल इंक्रीज करना शुरू हो जाता है. एफएसएच का लेवल जो इंक्रीज करना शुरू हुआ, इसकी वजह से इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? डेवलपिंग फॉलिकल. फॉलिकल जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, एनलार्ज हो जाता है. इसके इर्द गिर्द के सेल्स जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होके एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन. ठीक है जी. फॉलिकल की शेप ये हो जाती है एक मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल की शेप. मैच्योर फॉलिकल के अंदर ओवा होता है, ओवा के गिर्द कुछ सेल्स होते हैं और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है. अच्छा, अब इस स्टेप पे ये जो इर्द गिर्द वाले फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या बना रहे हैं? एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है. एस्ट्रोजन का लेवल जब हाई होगा तो वो किस पे जाके एक्ट करेगा? एंडोमीट्रियम के ऊपर. एंडोमीट्रियम जो है उसकी थिकनिंग बढ़ जाएगी. यहाँ पे देखें इसकी थिकनिंग कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसकी थिकनिंग बढ़नी शुरू हो गई है. इट गिव्स वेलवेटी अपीयरेंस, क्योंकि ये जब भी किसी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ना हो तो वो फिर स्ट्रेट नहीं रहता, स्मूथ नहीं रहता, बल्कि उसमें कर्व्स और बेंड्स आ जाते हैं. तो ये इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसकी वेलवेटी अपीयरेंस दे देती है. अच्छा, जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑन द पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के ऊपर इसका नेगेटिव फीडबैक होता है और एफएसएच का लेवल लो होने की कोशिश होती है और साथ एलएच का लेवल हाई होने की कोशिश होती है. लेकिन आप यहाँ पे देखें जो ये पॉइंट है इस पे एफएसएच का भी लेवल बहुत हाई हुआ है, एलएच का भी लेवल बहुत हाई. जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है और वो एफएसएच को कम करने की कोशिश करता है तो उसके साथ ही एलएच का एक पीक आती है, एलएच की सर्ज आती है. अब एक्चुअली एक ही हार्मोन है जो एलएच और एफएसएच दोनों की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहा है, जीएनआरएच. इसलिए जब एलएच की पीक आएगी तो साथ ही एफएसएच की पीक आएगी, लेकिन हम इसको कहते हैं एलएच की पीक. ठीक है. अब यहाँ पे जो एलएच का एक बहुत हाई लेवल आया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग ऑन द mature follicle and the mature follicle burst and the process is called ovulation. Ovulation सिर्फ 5 मिनट्स का प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे नीचे ग्राफ में इसको शो नहीं किया गया. एक ओवेरियन साइकिल का स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द ओवा विच इज देन गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द fallopian tube and uterus, and there is a chance of fertilization if sperms are present in the female reproductive tract at that time. अच्छा, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? इस स्टेप पे आप देखिए एस्ट्रोजन की पीक आई हुई है. एस्ट्रोजन की पीक क्यों आई है? एफएसएच का लेवल जहाँ पे हाई होगा वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा. लेकिन अब एलएच का लेवल जो है वो एफएसएच से काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, एफएसएच का लेवल यहाँ पे लो जा रहा है. इस कंडीशन में क्या होगा कि LH will act on the remaining follicular cells of this mature ova, mature follicle, and the remaining cells will form corpus luteum. Corpus luteum is responsible for the production of the hormone progesterone. ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे हाई होना शुरू हुआ है. अब प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फर्दर जाके इसका भी टारगेट ऑर्गन यहाँ पे एंडोमीट्रियम ही है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लैंडुलराइजेशन एंड वेस्कुलराइजेशन, कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स को बढ़ाएगा इस वॉल के अंदर जो थिकनिंग हुई है, जिसकी वजह से सेल्स मजीद डिवाइड करेंगे. इसके साथ ही यहाँ पे ग्लैंड्स बन जाएंगे डिफरेंट तरह के जो कि न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे. इस स्टेज पे अगर
एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो चुकी है तो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन तक और फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन तक उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगी? इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन के जरिए जो कि यूट्रस के अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अर्लियर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सर्विक्स। सर्विक्स इज यूजुअली ब्लॉक्ड विद द म्यूकस प्लग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब तक एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो एस्ट्रोजन जो है वो उस म्यूकस प्रोडक्शन को जो सर्वाइकल रीजन में सर्विक्स में उसको थिक रखता है। उस थिक म्यूकस में से स्पर्म्स क्रॉस नहीं कर सकते, स्विम नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तो वो उस सर्वाइकल म्यूकस की, सर्विक्स की म्यूकस की कंसिस्टेंसी को थिन कर देता है और वो थिन म्यूकस जो है इट अलाउज द पैसेज ऑफ स्पर्म्स। सो as a result what is going to happen, that sperms are going to swim towards this area and usually fertilization takes place in fallopian tube. From fallopian tube, after fertilization immediately the process of development starts और cleavage होनी शुरू हो जाती है और 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage यहाँ तक पहुँचती है और 16 cell stage है उससे भी थोड़ी सी आगे की stage जो है वो यहाँ पे swim करती रहती है और उस वक्त उसकी जो food requirement है वो कैसे पूरी हो रही है, वो glandularization की वजह से हो रही है जो कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल में ग्लैंड्स बन गए और उसके बाद काफ़ी 64 सेल स्टेज के बाद वो एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है और फिर उसके भी काफ़ी टाइम के बाद उसकी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है। एक दफा अगर प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाए तो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहे तो कॉर्पस ल्यूटेम भी बरकरार रहता है और ये एंडोमेट्रियम की वॉल भी थिक रहती है। बट इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, देयर इज नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट सेक्रेटरी फेज तो जारी रहेगी लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका अपना ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा और इफ देयर इज फर्दर नो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा से नहीं बन रहा तो कॉर्पस ल्यूटियम से बनने वाला प्रोजेस्टेरॉन इनफ नहीं होगा और एलएच को कोई मैसेज नहीं मिलेगा कि वो कंटिन्यूसली सिक्रीट हो और एलएच जो है उसके लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। जब एलएच के लेवल्स डिक्रीज होंगे तो कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होता चला जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होता चला जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता चला जाएगा, हत्ता कि ये दोनों हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इनका लेवल ब्लड में काफ़ी कम हो जाएगा। जिस वक्त ये ब्लड में लेवल कम होगा तो सिक्रेटरी फेज खत्म हो जाएगी। सिक्रेटरी फेज किसकी सिक्रीशन है? द सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब ये जितनी भी थिकनिंग हुई थी यहाँ से लेकर देखें ये इसकी नॉर्मल विदाउट एनी हार्मोन द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम इज दिस, इतना लेवल पे होना चाहिए। लेकिन ये जो इतना लेवल इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? पहले एस्ट्रोजन की वजह से, बाद में प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। पहले यहाँ पे देखें ब्लड सप्लाई कितनी कम है, अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कितनी ज़्यादा है। ये किसकी वजह से हुई है? ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये जो थिकनिंग एक्स्ट्रा हुई है ब्लड वेसल्स जो ज़्यादा हुए हैं दे आर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन और यहाँ पे जो ग्लैंड्स बने हैं ये भी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। लेकिन अब क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स सपोर्टेड नहीं रहेंगे। ऑल दिस ग्रोथ वाज डिपेंडेंट ऑन द estrogen and progesterone. When the level of estrogen and progesterone decreases, then there is this tissue is unable to survive on its own. There is sloughing off of this tissue, which is the start of menstruation, और ये सारे सेल्स जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है, एक्स्ट्रा वेस्कल ब्लड वेसल्स बनी है, ये सब टूट फूट के ख़त्म हो जाएंगी और ये सारे जो फ्लूइड है ये बॉडी से बाहर निकल आएगा इन द फॉर्म ऑफ menstrual फ्लो। सो 1 to 28 डेज में ये रिपीट होता है और साइक्लिक फॉर्म में अप टिल द एज ऑफ 50 years. Menarche is the start of menstrual cycle and menopause is the end of the menstrual cycle, which is around about 50 years in most females, and the reproductive age of females is between menarche and menopause because ovulation and from implantation of embryo can take place only during these years. There are certain disorders of reproductive system which are going to result in infertility. There are many causes of male and female infertility. Male infertility is classified into generally 4 main groups: azoospermia, oligospermia, sperm deformities, and autoimmune disorders. Azoospermia is the condition in which there is no production of sperms in the semen, or it can be due to blockage of the
seminiferous tubules or vas deferens, etc., or it can be due to any injury or any other congenital defect. Oligospermia is when the number of sperms production is very low and 100,000 per million, 100,000 sperms per ml जो है उससे भी अगर कम हो, then 20 million sperms per ml से अगर कम हो, then it is called oligospermia. And sperm deformities is the condition in which the sperms are produced but they have got certain defects in them, so they are unable to swim properly and reach the ova for the process of fertilization. Autoimmune disorders are those in which the antibodies of the person himself attack on the sperms and they are unable to survive outside the testes, and once they are released they are going to be attacked by antibodies of the immune system and they are going to be killed. फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेज इंक्लूड फेलियर टू ओव्यूलेट. अगर LH अभी हमने देखा कि ओव्यूलेशन जो है उसके लिए LH की एक सर्च चाहिए, अगर वो सारे हार्मोन्स बिल्कुल उसी तरह से ना प्रोड्यूस हों जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो प्रोसेस सही नहीं हो सकेगा, ओव्यूलेशन भी नहीं हो सकेगी. Then the second cause is blocked oviduct. If the oviduct or fallopian duct, tubule or duct is blocked congenitally or due to some other problem, then again it can cause infertility. If there is uterus damage due to fibroids, which are some growth inside the uterus or injury, etc., then it can also cause infertility. Cervical mucus is very important. We discussed it earlier that the thickening of cervical mucus determines whether the sperms are going to swim through them or not. So if the cervical mucus is very thick throughout the period, then it is going to cause a type of infertility. Endometriosis is the situation in which small pieces of endometrium start growing on other parts of the reproductive structure, even on ovaries. और जब ओवरीज के ऊपर डेवलप करना शुरू कर देंगे तो फिर ओव्यूलेशन के बाद एग का रिलीज होके ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है. सो दैट कॉजेज एन इनफर्टिलिटी. Treatments of infertility include IVF, in vitro fertilization. In vitro fertilization को आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, और इसमें होता क्या है, सबसे पहले ओवरीज को स्टिमुलेट किया जाता है हार्मोन थेरेपी के जरिए, FSH के जरिए, ताकि ज़्यादा एट अ टाइम मोर देन वन ओवा इज गोइंग टू undergo the process of oogenesis and development. और फिर सेकंड स्टेप पे उन एग्स को पिकअप किया जाता है बाय एस्पायरेशन, एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को, और उसको उसके एब्डोमेन में से हॉलो नीडल के ज़रिए सक किए जाते हैं ओवा. ओव्यूलेशन यानी कि कंट्रोल ओव्यूलेशन होती है. FSH प्रोवाइड करते, LH नहीं प्रोवाइड करते. ये देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ओव्यूलेशन तब होगी जब LH का सर जाए. अगर सिर्फ FSH का लेवल हाई होता जाएगा, LH का लेवल हाई नहीं होगा, तो ओवा मैच्योर हो जाएंगे लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगी. ठीक है जी. सो मैच्योर फॉलिकल्स को अल्ट्रासाउंड कंट्रोल के जरिए ढूंढा जाएगा ओवरीज के ऊपर से, और उनमें से उसको एस्पायर किया जाएगा, सक किया जाएगा विदाउट डैमेजिंग देम वैक्यूम पंप के जरिए. अच्छा, फिर एक ट्यूब में यानी कि ओवा इकट्ठे हो गए, दूसरे ट्यूब में जो है वो स्पर्म्स लिए जाएंगे और इन दोनों को एक ट्यूब में इकट्ठा किया जाएगा. दैट इज गोइंग टू कॉज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन ओवा एंड स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेस एट suitable temperature and conditions. The fertilized ova will undergo the process of development और उसको 8 cell stage तक outside the body डेवलप करने दिया जाता है. फिर अंडर माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन से एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो गए हैं, और फिर उसको जितने भी एम्ब्रियोज में डेवलप हो गए हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द यूट्रस, और वो जो है या इन दैट यूट्रस द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट द यंग वन इज born. There are some other problems associated with the development as well. Miscarriage is the condition in which the incompletely developed embryo comes out of the body on itself automatically, spontaneously. That is called miscarriage. The miscarriage is different from abortion. Miscarriage is due to natural reasons and not by the choice, while abortion is terminating the process of pregnancy by choice. The sexually transmitted diseases are many, which includes AIDS, which you have studied in detail in your first year.